Welcome to my channel, The Tooth Fairy, and our today's topic is pneumococcus. Now, pneumococcus was an older name. Now it is classified with streptococcus and called as streptococcus pneumoniae because it shares genetic similarities with streptococcus. Basically, ये upper respiratory tract में normal commensal होता है. That means it is not causing an infection if it is in a controlled number. ठीक है, normal है ये flora हमारे upper respiratory tract में. But it can cause pneumonia and otitis media. Otitis media is inflammation of middle ear in kids if the number is increased and it starts causing infection. Now, if you see this slide, basically ये क्या है? ये India ink preparation है. India ink preparation में capsule remains unstained. The ink is unable to penetrate the capsule, but बाकी सब कुछ stain हो गया. The background, the organism as well. But capsule is unstained. So India ink preparation is a negative stain. It is also used in Cryptococcus. ठीक है, इसमें जो कैप्सूल है वो एक हेलो की तरह अपीयर हो रहा है एंड जो ये डिप्लोकोकाई है दैट मीन्स अ पेयर ऑफ न्यूमोकोकस इन वन कैप्सूल. नाउ अगर इस पेयर को ऑब्जर्व करें सो देयर आर ब्रॉड एंड्स एंड अ शार्प एंड. सो ब्रॉड एंड्स आर इन कॉन्टैक्ट एंड पॉइंटेड एंड्स हैं इसमें. Other thing is, it is gram-positive, non-motile and non-sporing, which is similar to Staphylococcus and Streptococcus. Now, capsule encloses each pair. Old cultures के अंदर capsule may be lost, and then there are aerobes and facultative anaerobes. They form large mucoid colonies. अब जो भी हमारा blood agar होगा, उस पे they will be seen as mucoid colonies. अलग से mucus होगा. Then the mucus is due to capsular polysaccharides. It is basically a sensitive organism and get destroyed at 52 degrees Celsius in just 15 minutes. लेकिन जो Streptococcus and Staphylococcus थे, they were difficult to kill. So to culture this pneumococcus, we can grow it in enriched media. Enriched media means blood से enriched होगा, उसमें grow करेगा ये. Growth can be improved by using 5 to 10% of CO2. टेम्परेचर हमने 37 डिग्री सेल्सियस रखना है. pH 7.8 रखा है इसमें. ये सब is similar to Streptococcus and Staphylococcus. Now, specimen is inoculated on blood agar and incubated at 37 degrees Celsius for 24 hours. हमारे पास टिपिकल कॉलोनीज होंगी वो अल्फा हिमोलिसिस शो करेंगी. ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा एनारोबिक कंडीशंस होंगी तो बीटा हिमोलिसिस भी शो कर सकती हैं. अल्फा हिमोलिसिस क्या होता था? फिनिश डिस्कलरेशन अराउंड द कॉलोनीज. तो ब्लड अगार को पार्शली हिमोलाइज किया था. एंड अगर एनारोबिक कंडीशन है तो कंप्लीटली हिमोलाइज करेगा वो ब्लड सेल्स को. दैट इज बीटा हिमोलिसिस. अगर prolonged incubation है, we keep it for more than 24 hours, then we are going to observe some specific appearance which is called as Drotsman appearance. So Drotsman appearance में क्या होता है? There are raised edges. जो edges हैं, they are raised and the center has a dip. Which is similar to carom coin. कैरम बोर्ड पे हम कैरम coins यूज करते हैं तो that is similar. उसकी edges raised हैं लेकिन center में dip है. So that is called a Drotsman colony or a central ambonation with raised edges. तो आपने इसमें क्या याद रखना है? एक तो different point आता है कि capsule present है. Then the second is Drotsman appearance. ये mucoid colonies हैं pneumococcus की. Now, why it shows beta hemolysis under anaerobic condition? Because उसमें अगर anaerobic condition है तो ऑक्सीजन कम है, मतलब ठीक है. तो जो ऑक्सीजन लेबाइल न्यूमोलाइसिन था, ठीक है, ऑक्सीजन लेबाइल न्यूमोलाइसिन विल नॉट वर्क इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज इट इज ऑक्सीजन लेबाइल. लेकिन अगर ऑक्सीजन ही नहीं है तो वो भी काम करेगा, ऑक्सीजन लेबाइल न्यूमोलाइसिन ओ. इसीलिए कंप्लीटली हिमोलाइज कर जाता है द ब्लड अराउंड द कॉलोनीज. Now, glucose broth में अगर देखें तो it will produce a uniform turbidity, same as Streptococcus and Staphylococcus. So next is biochemical reactions. First three you should remember by heart, since these are the tests which will help you to distinguish Streptococcus pneumoniae from Streptococcus.
फर्स्ट इज हिज सीरम वाटर। हिज सीरम वाटर क्या है? इसमें हमारे पास सीरम होता है, शुगर होता है, तो बेसिकली इट इज गोइंग टू टेस्ट कि जो न्यूमोकोकस है इट कैन कॉज फर्मेंटेशन ऑफ दैट शुगर और नॉट। इन्युलिन इज अ शुगर, सो इट विल टेस्ट द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। तो इन्युलिन को स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी कैन फर्मेंट। ओके, दिस इज हिज सीरम। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे टर्बिडिटी होगी है, दैट इज पॉजिटिव, एंड दिस इज अ नेगेटिव। इसमें ट्रांसपेरेंट है थोड़ा, इसमें टर्बिडिटी होगी है, so it is causing fermentation of inulin. Now the next is bile solubility test. Bile solubility test में we what bile का मतलब क्या है? सोडियम डिऑक्सीकोलेट इज बाइल ओनली। तो अगर हम टेस्ट ट्यूब में सोडियम डिऑक्सीकोलेट डाला हमने एंड देन वी ऐड द स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी टू इट, so it is going to lyse, it is going to break the streptococcus pneumoniae. So that means streptococcus pneumoniae will be soluble in bile, but it is not similar as in case with the streptococcus, other streptococcus. Okay, तो bile solubility test मतलब सोडियम डिऑक्सीकोलेट में ये soluble हो जाएगा, ये रहा। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस माइटिस है, दैट इज नॉट लाइज्ड बाय बाइल, बट यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी को बाइल ने लाइसिस, उसकी बाइल ने लाइसिस कर दिया है। बाइल इज सोडियम डिऑक्सीकोलेट ओनली। द नेक्स्ट इज सेंसिटिव टू ऑप्टोचिन। ऑप्टोचिन क्या है? अब ऑप्टोचिन इज एन एंटीबायोटिक। डिस्क यूज करेंगे हम जहाँ पे ब्लड अगार है, ठीक है, यहाँ पे कॉलोनी इंक्यूबेट हुई है, वहाँ पे वी कीप अ डिस्क ऑफ ऑप्टोचिन। इट्स सेम एज की, तो आपने एंटीबायोटिक की टैबलेट रख दिया, ठीक है। नाउ द टैबलेट स्टार्ट क्लियरिंग आउट द कॉलोनी, जो भी यहाँ ऑर्गेनिजम्स से उनको किल कर रही है वो एंटीबायोटिक, दैट्स व्हाई देयर इज अ क्लियरेंस अराउंड दिस डिस्क, दैट मीन्स इट इज sensitive to optochin. While other streptococcus like streptococcus mitis, you can see कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे optochin के पास भी ग्रोथ हो रही है, that means this antibiotic is not harming mitis. So these three tests are very important, and it will help you to differentiate streptococcus from streptococcus pneumoniae. Now catalase and oxidase नेगेटिव है ये, ठीक है। अगर आप याद करो तो स्ट्रेप्टोकोकस भी कैटलेज और ऑक्सीडेज नेगेटिव था, वाइल स्टेफाइलोकोकस कैटलेज पॉजिटिव था और ऑक्सीडेज नेगेटिव था। तो स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस में कैटलेज की वजह से यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश, बट इसमें जो कैटलेज एंड ऑक्सीडेज नेगेटिव है, ये सेम रिएक्शन है दैट टू स्ट्रेप्टोकोका। दिस इज हाउ यू रिमेंबर द थिंग्स, यू स्टार्ट रिलेटिंग द थिंग्स लाइक, अब कैटलेज एंड ऑक्सीडेज नेगेटिव आप सिंपली अगर याद रखोगे न्यूमोकोकस में तो वो याद नहीं रहेगा, बट इफ यू स्टार्ट मेकिंग अ टेबल ऑफ द प्रीवियस ऑर्गेनिजम्स विच डिस्कस्ड, यू विल इजिली रिमेंबर कि हाँ स्ट्रेप्टोकोकाई और न्यूमोकोकस का तो सेम ही था, कैटलेज एंड ऑक्सीडेज नेगेटिव। सो मेक start making tables for it, it will really help you. Next comes the antigenic structure. Antigenic structure is the structure of bacteria which is responsible for triggering immune responses in human when it enters the human body. Firstly, it is capsular polysaccharide, which is the most important. Then we have M protein, and other one is a group specific cell wall carbohydrate. Capsulopolysaccharide, it is also called as soluble specific substance, since it can diffuse into culture media wherever we grow this bacteria or in tissues where it is going to infect human. तो वहाँ पे सब में soluble हो सकता है ये tissues या culture media में, so it is called as soluble specific substance. Now based on this capsulopolysaccharide layer, okay, pneumococci can be classified into 90 types. तो 1 2 3 ऐसे पूरे 90 तक इसकी न्यूमोकोकाई की टाइप्स है बेस्ड ऑन कैप्सूल ऑफ पॉलीसेकेराइड। नाउ कौन सी टाइप है ये हमें कैसे पता चलता है? देयर आर थ्री मेथड्स। सो सीरोलॉजिकल टाइपिंग ऑफ न्यूमोकोकस इज कैरिड आउट बाय थ्री मेथड्स। फर्स्ट इज एग्लूटिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद टाइप स्पेसिफिक एंटीसीरम। एग्लूटिनेशन रिएक्शन हम प्रैक्टिकल लैब में ब्लड के साथ करते हैं, जब हम ब्लड ग्रुप डिटरमिन करते हैं तो जो भी ब्लड ग्रुप होता है उसमें क्या होता है, क्लम्पिंग हो जाती है सेल्स की, है ना, दे आर बाउंड टुगेदर एंड वी कैन इजीली विजुअलाइज कि हाँ जी इसमें एग्लूटिनेशन होगी, तो क्लम्पिंग होगी। तो ऐसे सेम रिएक्शन एग्लूटिनेशन रिएक्शन help us to identify this
कि कौन से टाइप का कैप्सूल पॉलीसेकेराइड है। सो फर्स्टली या हम पूरे ऑर्गेनिज्म की एग्लूटिनेशन चेक करेंगे विद टाइप स्पेसिफिक एंटीसीरम। हमने स्लाइड के ऊपर ऑर्गेनिज्म की ड्रॉप डाली, जो भी ऑर्गेनिज्म था उसके ऊपर हमने एंटीसीरम डाला। सपोज करो टाइप 1 का डाला तो कोई एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं थी, टाइप 2 का डाला कोई नहीं थी, टाइप 3 में आ गई एग्लूटिनेशन, दैट मीन्स इट इज टाइप 3 न्यूमोकोकस। देन सेकंड इज अब सिर्फ हमने कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड लेना है, पूरे ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं है, एंड देन वी ऐड टाइप स्पेसिफिक एंटीसीरम, इससे भी डिटेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्वेलिंग्स रिएक्शन, न्यूफिल्ड रिएक्शन और कैप्सूल स्वेलिंग रिएक्शन, ये 5 मार्क्स में दिया जाता है। नाउ जो क्विलिंग रिएक्शन है, इसमें कैप्सूल स्वेलिंग से आपको पता चल रहा है कि वी ऐड समथिंग टू इट एंड द कैप्सूल swells up. So it was described by Neufeld, that's why it is also called as Neufeld reaction. Now pneumococci को we mix on a slide with a drop of specific antiserum. Then we add methylene blue solution. तो जो भी टाइप का न्यूमोकोकाई है उस टाइप का ही हम एंटी सीरम डालेंगे, एंड देन वी ऐड मिथाइलिन ब्लू, ये 3 चीजें डल रही हैं, एंड देन द कैप्सूल स्वेल्स अप एंड अलग हो जाता है वो बाकी सारे मटेरियल से। बीच में है मटेरियल बट इट इज शार्पली डिलिनिएटेड, मींस यू कैन इजीली डिस्टिंग्विश द बाउंड्रीज ऑफ कैप्सूल। नाउ जो क्विलिंग टेस्ट है उसका सैंपल कैन बी टेकन डायरेक्टली फ्रॉम स्पूटम, या फिर हम जो कल्चर करते हैं वहां से जो हमारी बैक्टीरियल कॉलोनी होती है उसको हमने स्लाइड पे रखना है, या हम डायरेक्टली स्पूटम ले रहे हैं, ठीक है। If we see this picture, this is negative Quilling's reaction, this is positive. यहाँ पर सिर्फ वाइट कलर का बाउंड्री एंड ब्लूइश टिंज है। यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव में देखो तो विल सी कि यहाँ पे कुछ स्वेलिंग हो गई है, द साइज इज बिगर नाउ, so the capsule has swollen and it is refractile under microscope, so we can easily visualize it. Then the other antigenic structures M protein, हर एक टाइप के लिए डिफरेंट होता है, जैसे हमने अभी कैप्सूल पॉलीसेकेराइड के बेसिस पे पढ़ा कि 90 टाइप्स हैं, इसके लिए भी हर एक न्यूमोकोकस के लिए डिफरेंट प्रोटीन होगा, एंड इट इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी टाइप ऑफ विरुलेंस इन ह्यूमन. Now the next one is cell wall carbohydrate or C substance. When pneumococcus enters human body, then it triggers immune system, and then immune system precipitates, it makes abnormal protein globulin. Okay, globulin otherwise helps in liver function, blood clotting, and fighting various infections. But इसमें abnormal protein ये बन रहा है हमारा globulin. What happens is न्यूमोनिया के एक्यूट फेस में ये हमें abnormal प्रोटीन दिख जाएगा, बट इट डिसअपियर्स ड्यूरिंग कॉन्वलेसेंस. कॉन्वलेसेंस मींस रिकवरी और लेटर स्टेजेस, ठीक है, वहां पे ये प्रोटीन नहीं होगा, बट एक्यूट फेज में जैसे जब बॉडी को अटैक किया है, न्यूमोनिया हो गया है, देन इट विल बी देयर. ठीक है, सी रिएक्टिव प्रोटीन इज नॉट एन एंटीबॉडी, इट इज नॉट फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन, इसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल कार्बोहाइड्रेट और सी सब्सटेंस. So C-reactive protein is used to determine the activity of pneumococcus and various other diseases as well. COVID के टाइम पे भी C-reactive protein हम चेक कराते थे. That is an important indicator कि inflammation है बॉडी में, तो there is chance कि COVID है, ठीक है. तो सी रिएक्टिव प्रोटीन बेसिकली शोज कि कोई भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, कोई भी मेलिग्नेंसी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, टिश्यू डिस्ट्रक्शन, और in rheumatic fever it is also used. Now C-reactive protein is basically produced by liver and it is detected by latex agglutination test. So you can now this pneumococcus is when capsulated, तो capsulated तो smooth है, ठीक है, उस टाइम पे it is virulent because it can protect itself through capsule, but जो rough forms and they are avirulent, they are not causing any harm. Virulent means attack, it can attack in encapsulated and smooth form, and it is avirulent in non-capsulated or rough forms. On repeated subculture, a smooth to rough variation occurs. जो अगर हम repeated subculture करें, that means we take sample from a patient and then we culture it, okay. उस कल्चर से जितनी कॉलोनी हमने ग्रो करी है, देन वी अगेन टेक पार्ट ऑफ दैट कॉलोनी एंड देन अगेन कल्चर इट, कि हमने बहुत और टेस्ट करने हैं. बट क्या होगा अगर हम ऐसे रिपीटेड सब कल्चर करेंगे, स्मूथ टू रफ वेरिएशन हमें दिखेगी. तो जो रफ वेरिएशन है दैट इज एविरुलेंट, दैट इज नॉट हार्मफुल.
Next is toxins and other virulence factors which are present in pneumococcus and which are harming human body. Okay, the first one is an oxygen labile intracellular hemolysin. ये हमने पढ़ा था ड्रॉट्समैन अपीयरेंस के केस में जिसमें रेज्ड एजेस थी और सेंट्रल अम्बोनेशन थी and raised edges थी. That was Karam coin appearance. Okay, also ड्रॉट्समैन appearance. So जो ड्रॉट्समैन appearance थी that was due to this hemolysin. Hemolysin means that is causing breakdown of RBC. The next one is leukocidin, which is causing breakdown of WBCs. Other one is pneumolysin, which basically is complement activating and it is immunogenic, means it is triggering immune system. Now, how does it spreads? So now talking about the epidemiology, it is spread by inhalation of contaminated dust, droplets, or infection, which then is transferred to the pharynx, and then the disease results. Disease usually results in the cases where the host system has not too good active immune system, or they already have some respiratory viral infection, or they are weak, malnutrition, debilitated. So basically हमने पढ़ा था कि commensal है in upper respiratory tract infection, but when the number is increased, or there is some other respiratory viral infection, then it can cause this infection. Then pathogenesis, हमने 4 diseases पढ़नी है यहाँ पे. First is lobar pneumonia, then is bronchopneumonia, meningitis, and rest of the infection. So this is the most common bacteria causing pneumonia. अगर आपको question आता है pneumonia से related, तो you are going to tell about Streptococcus pneumoniae, ठीक है. Both lobar and bronchopneumonia, आपने second year pathology में lobar and lobular pneumonia का difference पढ़ा. Bronchopneumonia is lobular pneumonia only, ठीक है. It is also responsible for acute tracheobronchitis. Tracheobronchitis is inflammation of trachea, that is your windpipe, and bronchi. And then is empyema. Empyema basically is pus in the pleural space. Pleural space क्या होता है? The outer lining of lung and the inner lining of chest wall. उसके बीच में जो space होता है उसमें pus produce कर सकता है, तो that is empyema. So lobar pneumonia generally results when the general resistance is lowered. The body is not able to fight the infection, or the person has weak immune system. उस case में it can cause lobar pneumonia. Common types हैं type 1 to 12 in adults and type 6 in children. ठीक है, ये मैंने आपको डिटेल में इसलिए बताया since the question will come about pneumonia, so you should know more about pneumonia. Then we have bronchopneumonia or lobular pneumonia. अगर कोई ऑलरेडी वायरल इन्फेक्शन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, then it will cause bronchopneumonia, and it can be caused by any serotype of pneumococcus. The other one is meningitis. Meninges क्या होती हैं? Dura mater, pia mater, arachnoid matter, which are surrounding your skull, protecting your brain. So ये brain में जाके इन्फेक्शन कर रहा है brain की layers को. But meningitis is not common because of pneumococcus. There are other bacteria which can cause it. Neisseria, Haemophilus. They are, they अगर meningitis का question आता है, Neisseria meningitis उसके लिए responsible होगा. That will be the answer. But still ये भी कुछ very rarely it can cause meningitis, and basically it spreads from pharynx to meninges or brain via bloodstream. Then we have some other infection we read about empyema, which is pus in pleural space, pericarditis, otitis media, inflammation of middle ear, sinusitis, conjunctivitis related to eye, peritonitis, and suppurative arthritis. These all are some other complication of pneumonia. सो टॉकिंग अबाउट लैब डायग्नोसिस में क्या कर रहे हैं, अभी हमें पता नहीं है कि बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया जिसने एक पेशेंट को इन्फेक्ट किया है. सो थ्रू डिफरेंट स्टेप्स वी आर गोइंग टू मेक फाइनल डायग्नोसिस. Firstly, we will collect a sample from patient. Sample can be sputum. It can be cerebrospinal fluid in case of meningitis. It can be pleural exudate in case of pneumonias, and blood too. Then ये 4 टाइप के हम सैंपल यूज कर सकते हैं. Then if question comes for meningitis, CSF जरूरी लिखना है. If question comes for pneumonia, you're gonna write about pleural exudate or sputum. Then we have collection and transport. अब collect कर लिया है तो स्टेराइल कंटेनर्स होने चाहिए
स्टेराइल मीन्स और कोई उसमें ऑलरेडी बैक्टीरिया ना हो, वरना मिक्सिंग हो जाएगी एंड वी विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश कि कौन सा कॉजेटिव एजेंट है. सो एसेप्टिक कंडीशंस शुड बी फॉलोड फॉर द प्रोसीजर. अगर डिले हो रहा है, एक तो क्विक ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए, स्टिल अगर डिले हो रहा है एंड इफ इट इज अ CSF specimen, we should never refrigerate it, because other cause of meningitis, which is Haemophilus influenzae, it can die at cold temperature. So we are going to maintain a temperature of 37 degrees Celsius for CSF specimen, because we don't know yet कि वो इन्फ्लुएंजा की वजह से है या pneumococcus की वजह से है. Then we are going to directly do direct microscopy and antigen detection. So gram staining में अगर देखो तो gram positive है, ये gram positive दिख रहे हैं, Diplococci in a pair. These purple वाला is gram positive. Then जो ये है small 1 micrometer diameter है, ये हमें दिख रहा है माइक्रोस्कोप पे, ठीक है. एक और वैल्यू आएगी which is this one 0.5 to 1 mm. So don't get confused. When we culture it on blood agar, we get the colony size. Colony size जो हमें visualize हमें दिख रहा है, उसमें एक बैक्टीरिया का नहीं देख रहे हैं, मल्टीपल बैक्टीरिया पूरी कॉलोनी का साइज देख रहे हैं. दैट इज 0.5 to 1 mm. स्ट्रेप्टोकोकस की भी इतनी ही थी. एंड इसमें वी आर सीइंग कि एक जो हमें दिख रहा है ऑन माइक्रोस्कोप उसका साइज कितना है. देन वेरी इंपॉर्टेंट कैप्सुलर स्वेलिंग, हमें पता है कैप्सुलर स्वेलिंग के मेथड्स वो न्यूफील्ड मेथड था. द अदर वन इज काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस दैट वी फॉलो इन आवर लैब्स, ठीक है. न्यू डिटेक्टेड बाय लेटेक्स एग्लूटिनेशन और को एग्लूटिनेशन. लेटेक्स एग्लूटिनेशन भी हमने CRP टेस्ट में पढ़ा है, C-reactive proteins में. Now we have read about the India ink preparation, which is a negative stain, and जिसमें कैप्सूल एक क्लियर हेलो की तरह दिखता है. The background as well as the bacteria वो डार्क हो जाते हैं and सिर्फ कैप्सूल दिख रहा होता है. So this is the important part. देन कल्चर में हमने पढ़ा था जनरली अल्फा हीमोलाइसिस होंगी, दैट इज पार्शियल हीमोलाइसिस, बट प्रोलॉन्ग्ड इंक्यूबेशन टाइम में कंप्लीट हीमोलाइसिस यानी कि बीटा हीमोलाइसिस भी हो सकता है. एंड प्रोलॉन्ग्ड इंक्यूबेशन में हमारे पास ड्रॉट्समैन अपीयरेंस और कैरम कॉइन अपीयरेंस और सेंट्रल अम्बुनेशन विद रेज्ड एजेस, ये भी हो सकता है. Then we have biochemical reaction. We discussed all these things before. So inulin fermentation, bile solubility test, and optogen sensitivity test. ये तीनों will help us to distinguish pneumococcus from streptococcus. The next is अब आपने detect कर लिया है कि finally कि pneumococcus है आपका bacteria. Now you are going to prescribe a person with some antibiotic. But not every antibiotic, not every antibiotic will work on that strain, because multiple strains हैं. कई बार we are advising penicillin, but the strain is penicillin resistant, so the medicine will be of no use. So we are going to do antibiotic sensitivity test, जिसमें हम कॉलोनी के ऊपर different antibiotics try करेंगे and हम check करेंगे कौन सी antibiotic is lysing that colony, ठीक है. Through this then we will prescribe the patient for medicine. Then the treatment is generally parenteral penicillin. Parenteral is other than mouth, that is IV, IM, like that, or subcutaneous. तो हम क्विकर वे देंगे पेनिसिलिन, क्विकर होता है ये parenteral वे, ठीक है, वो देंगे पेनिसिलिन का. एंड इन केस ऑफ पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन वी आर गोइंग टू एडवाइस फॉर cephalosporin. Now, talking about prophylaxis, prophylaxis is like prevention or vaccination. But since there are like 90 types, 90 serotypes, and every serotype has a different capsular polysaccharide, like it makes immunization not practical कि हम 90 serotypes के लिए 90 vaccines बनाएं. So what we did is कि we created only a few serotypes are infected for us. So we created immunization against those serotypes. 3 types की pneumococcal vaccines they are available. Firstly, children from 2 months to 2 years उनको एक heptavalent pneumococcal conjugate vaccine देते हैं. Hepta is 7, तो 7 serotypes के against होते हैं. Next one is we add 6 more to it and we create a 13 valent vaccine which is for young children. Then there are 23 serotypes. Firstly 7 था, then 13 था, फिर जैसे जैसे 23 serotypes हमने बनाए, उनके अगेंस्ट वैक्सीन बनाई, एंड दैट इज एडमिनिस्टर्ड एज अ सिंगल डोज इंजेक्शन.
It is given in case of immunodeficiencies like diabetes or HIV, or some other case like multiple myeloma. In lymphoma, it is not advised. Okay, thank you everyone. I hope this lecture was helpful. Please share and subscribe. And also, I organize some dental quiz on Instagram. You can check out my page from the scan code or just the username, the Tooth Fairy YouTube, and follow me there. Bye bye.